Good morning, dear students and esteemed parents. Over the last few years, the academic exhibition has become an imperative part of our school curriculum as well as a tradition. It involves integrating the students' knowledge and skills to real life situations and gaining valuable experience from that. This year, despite the pandemic, my students and teachers were unwavering in their decision to continue this learning experience. This involved collecting all the parts of the project remotely. This arduous process involved deciding on the content, preparing the parts, collecting them, and editing them to make a final presentation. And I am proud to say that my students, teachers, in charges, and my IT team have done a wonderful job. Congratulations. This year, we named our academic exhibition Incredible India. As you know, India is a land of diverse cultures, religions, and traditions. As a part of this project, the students have researched facts about the diverse states of India and integrated it with the subject knowledge they have gained in their classes. The final presentation will give you a virtual tour of the diverse states of India, and I'm sure this beautiful journey of incredible India will mesmerize our audience. Happy viewing. खूबसूरती को हमने अक्सर भटकते हुए देखा है। हाँ, मैंने इन चंद अल्फाजों में जम्मू कश्मीर को लिखा है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यह सुंदरता की मिसाल का संग्रह है। यह अपनी असाधारण सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। कहते हैं कि जब जहांगीर ने पहली बार कश्मीर में कदम रखा तो यही कहा, धरती पर यदि कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। अगर तुम स्वर्ग की सैर करना चाहते हो, कश्मीर की पहाड़ियों वादियों में रख लो पैर। यहाँ खुशबू है वादियों में, खूबसूरती है फिजा में। कश्मीर की आबो हवा, हरे भरे मैदान और प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी और अनुपम सौंदर्य छटा बिखारती है। इसलिए कश्मीर सबके दिल में बसता है और सैलानियों को बार बार बुलाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। यो तो यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन दुनिया भर में मशहूर पहलगाम, सोनमर्ग, पटनीटॉप, गुलमर्ग, लद्दाख और कारगिल जैसे स्थान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डल झील और नागिन झील यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं और राष्ट्रीय पार्क और ब्रंचिंगम वन्य जीव अभयारण्य भी है। जब से मैंने जम्मू कश्मीर की प्रकृति देखी है, तब से मैं फिर किसी को भी देखने की चाह नहीं रही। Location of Jammu and Kashmir. The name Kashmir probably comes from two words, Ka meaning water and Shmir meaning dried. According to the legend, it was created when the sage Kashpya drained a lake. Locals call it Kashir. It lies to the north of the Indian state of Himachal Pradesh and Punjab and to the west of Ladakh, which is administered by India as a union territory. It has the total population of 1.36 crores and divided into 20 districts. It was declared as a union territory on 31st October 2019. The latitude and longitude coordinates of Jammu and Kashmir are 33.77 minutes 82 degree north, 76.57 minutes 62 degree east. Landforms. The Union Territory is divided into three geographic regions: West, Ladakh, Kashmir, Valley, and Jammu. The higher regions covered by Purvanchal, Karakoram, and Inner Himalayan ranges of mountains. The important river system of the state are the Chenab, the Ravi, and the Jhelum.
The highest and the most important mountain is Banihal Pass. It connects the Kashmir Valley in the Union Territory of Jammu and Kashmir to the outer Himalayas and plains to the south. Other mountain passes in Jammu and Kashmir include Banihal Pass, Gandala, Munawal Pass, Pir Panjal and Sithan Top. Belt located in the Jammu Kashmir has a very diversity of plant life, and on this basis people depend on their daily needs of food, medicine, fiber and fuel, etc. The species found here are deodar, pine, fir and heather. Jammu Kashmir is a very cold region. The conical shape of the trees and needle-like leaves help the plant to survive by sliding off and getting the rid from the snow of winter. Now, after providing information about diversity of plants, I would catch your attention towards a beautiful wildlife reserves found in Jammu and Kashmir. There are a total of 17 wildlife sanctuaries found in Jammu and Kashmir, and some of them are Gulmarg Wildlife Sanctuary, Hirpura Wildlife Sanctuary, etc. Black-necked crane is the state bird and Kashmir stag is the state animal of Jammu and Kashmir. The rare mammals of the region include the Kashmir stag, the musk deer, the white yak, the snow and the brown bear, to name a few. Some of the rare and threatened birds found in the area include species like the Himalayan golden eagle, the black-necked crane, the Himalayan snowcock, etc. The migratory water birds include duck, geese, swans. The most common water bird which visit the state during winter months are mallard, common-tail, pintail, etc. Let's talk about kings of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir was a princely state during the British East India Company rule as well as the British Raj in India from 1846 to 1947. Maharaja Gulab Singh became the first Maharaja of Jammu and Kashmir. He died on 7 August 1857. Maharaja Ranbir Singh was second Maharaja of Jammu and Kashmir. Pratap Singh and Hari Singh were next two rulers of Jammu and Kashmir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं आपको जम्मू और कश्मीर के धार्मिक स्थानों के बारे में बताने जा रही हूँ। जम्मू और कश्मीर ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इनमें से कई तो 9वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर हैं, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर, अमरनाथ गुफा, शंकराचार्य मंदिर, किमची मंदिर आदि। इनमें से कुछ मंदिरों का वर्ण इस प्रकार है। वैष्णो देवी मंदिर, ये मंदिर कटरा उधमपुर जिले में है। यह स्थान त्रिकुटा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ लोग वैष्णो देवी के 3 रूपों की पूजा करते हैं, जिनका नाम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। अमरनाथ गुफा। अमरनाथ मंदिर को 5वीं शताब्दी में बना कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये मंदिर एक शिवलिंगम के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ का एक प्राकृतिक निर्माण है। कहा जाता है कि ये चंद्रमा के चक्र के अनुसार बनता है। अंत में यही कहना है, तेरी झीलों की सुंदरता में है पागल बादल, माँ के माथे पर दमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पर कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरी कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। आओ ਸਾਰੇ अपना ज्ञान ਵਧਾਈਏ, कश्मीर ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ। ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਲੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਲੇ। ਝੀਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ,
ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫੱਬਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਹਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਸਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਸਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਗੁਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਦੱਸਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਮ ਭੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੇਮਿਸ਼ ਗੋਮਖਾਂ ਦੀ ਮੱਠ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਦਮਾ ਸੰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜਦੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ। ਸੁਹਣੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਨੁਹਾਰ, ਟਿਊਲਿਪ ਦੀਆਂ ਵੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। After getting an overview of wildlife, in time for some fun and frolic. We dance for laughter, we dance for madness, we dance for hope, we dance to be ourselves. Now it's time to have a look at the dance forms of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a land of beauty and serenity. It has its own uniqueness and specialty. When it comes to the dance form of the land, one of the famous form is Roop. The pronunciation is raw in cities and rough in villages. The beautiful dance form is usually performed during all the occasions. It is a combination of simple and intricate footsteps. There are few more dance forms too: Band Panther, Band Jashan, Bacha Nagma, Hafisa dance, etc. As we know that any dance form is incomplete without the relevant attire. So let's talk about the dresses of the land. Most of the garments are made of wool, silk with embroideries. The traditional boots and fairan is the most popular form of dress among both men and women. It is the most prominent attire for Kashmiri women. This fairan is the most prominent attire for Kashmiri women. Dress and food goes hand in hand. So let's talk on some delicacies of the land of Jammu and Kashmir. The horticulture and the tourism is the backbone of the economy of the state. The Jammu Kashmir food culture is unique and much different from the rest of the country. It has a wide variety of mouth-watering dishes that are filled with authentic flavors. The famous food of Kashmir includes Kashmiri pulao, rajma, and aloo dum. Names of some of the traditional food of Jammu are manni, katha meat, and mitha bhat. Kashmir is a paradise for every meat and sweet lover. Most of the dishes are prepared from delicate and tender meat of goats and lambs. Many items are rich in nuts and dry fruits like walnuts, almonds, dates, etc. Food culture primarily consists of rice along with meat gravy. Rice is the staple food of the state due to extensive cultivation of the crop. It is time to visit some tourist places. Millions of visitors from all over the world flock every year to enjoy its beauty.
Places in Jammu and Kashmir that fascinate visitors are Dal Lake with bountiful flora and fauna unearthed, Gulmarg sky, paradise with natural landscape, Vaishno Devi Jammu, city of temples blessed and protected by Vaishno Devi, Sonmarg, the kingdom of untamed beauty, which is also used as base camp of prison, Amarnath Yatra, Pahalgam, one of the best places for refreshment and excitement for tourists. Power of words can never comprehend the endless beauty that the state Jammu and Kashmir possesses. As we know, this state has been endowed with the nature's best. It has been an object of interest of many tourists around the world. With collected data on this information, we have made a table to show the comparison between number of visitors in different years. In the year of 2000. According to this table, the maximum number of visitors visited in the year of 2016 and the minimum number of visitors visited in the year of 2019. With the help of this table, we have made a bar graph. According to this bar graph, the number of visitors visited in the year of 2015 in Jammu and Kashmir were 90 lakh, in the year of 2016 were 95 lakh, in the year of 2017 were 70 lakh, in the year of 2018 were 10 lakh, in the year of 2019 were 5 lakh.